So, hello guys, welcome to day 9 of ACCA FR batch. Today, our agenda is to complete taxation IAS 12. So, let's start. What do you guys mean by taxation? What is taxation? Why it's collected? What's the government motto to collect taxation? Any idea, anything? Tax is something that the citizens of the country pay for the services provided by government. Mm-hmm. So that And what kind of services are provided by government? like road facilities, Mm-hmm. sewage, water, and etc. Daily necessities of Infrastructure, free infrastructure. Yeah. education, free hospitalization at a subsidized rate, interest-free loans to business entities, Hmm. government grants. We know government provide grants to and business entities, NGOs who have certain objective with a good social motive. These are the benefits of government provided to public and how the government earns money through taxation. Okay? Hmm. Yeah. So what kind we know that there are two kind of taxes. Which are those? DT and IDT. What is DT? Taxes paid on income, taxes paid on uh, goods and services. In India, it's GST. In UK, it's VAT. Okay, so we are not gonna learn IDT in this. Basically, indirect taxation. Our fully focus is going to be DT, direct tax, income tax, taxes paid on income. Okay. Okay. For IDT, we have entire subject which is UK taxation, entire rules and regulation we are going to learn there. Hmm. And for DT, we have proper accounting standard which is IAS 12. The reason for the reason why IDT do not have accounting standard is that it's very simple. Output tax, input tax. Output tax is total liability. Input is what we have claimed from government for the goods and services that we have provided. Uh, so that will deducted and will get the total tax payable for the year. Okay. Right. So there is nothing there is need to have a proper standard. But for DT we have standard and we are going to learn in detail over here. Okay. Direct taxation. What is the entry of passing the taxation entry? I mean, journal entry for taxation. It's a liability. Correct. Hmm. This will go in PNL. This will go in balance. PNL में कहाँ पे? You know PBT. Profit before tax. Then tax. What is tax? This is the tax. Then less what? Then we'll get what? Profit PA. after tax. PAT. Profit after tax. Balance sheet में it will show in current liability. Why it will show in current liability? Because we pay every year. Yeah, so it's within 12 months. Yeah, within 12. This is our first topic for today. Under and over provision of current tax. Before going reading all this stuff, let's understand what is under provision, what is over provision, overpayment, over provision. Hmm. So let's take a year end, first Jan
20x1. Okay, and year end is at December 20x1. In between the year, companies makes estimates of their tax payable. Why? Why they take estimate? To make provision. Because correct, provision is one part. Because tax is going to be paid. Let's take an example on 31st March. ठीक है? Yeah. टैक्स कभी साल करंट ईयर में नहीं पे होता, टैक्स नेक्स्ट ईयर में पे होता है विद इन 4 months. फॉर एग्जांपल एज पर इंडियन टैक्स as yeah, so the deadline to pay income tax is 31st July and the year end is 31st March. ठीक है? So till 31st March, company will estimate that current year tax part. Then, as per the actual tax liability, they will pay on 31st July. This is an individual tax payable. I mean, I'm saying the deadline. For companies, I think it's September, if I'm not wrong. ठीक है? So this is the क्योंकि why are we taking estimates? First, एक तो in current we are still in a operation of current year. We do not know year end पे क्या होगा, but we are taking the estimate कि क्या हो सकता है. Hmm. ठीक है? That is one question. दूसरा, accounting profit and tax profit are not same. Why accounting profit and tax profit are not same? Because accounting profit are prepared on accrual basis and tax profit are prepared on cash basis. Cash. Let's take an example. As per accrual, my revenue was $10,000. Okay, less all total expenses. All expenses is 5,000. Profit before PBT, profit before tax would be what? ठीक है, 5,000. Hmm. Let's take an example. Tax rate is 10%. This into 10%. ठीक है? Hmm. What will be your PAT? अब इस रेवेन्यू और एक्सपेंस के अंदर सारी चीजें हैं जो पेड हुई है और अनपेड है. फॉर एग्जांपल सेल्स भी है जो कुछ कुछ मैंने क्रेडिट पे किया हुआ है, एक्सपेंस भी है कुछ कुछ पेड हो कर दिए हैं, कुछ कुछ पेड नहीं किया हुआ है. Hmm. ठीक है? Hmm. Hmm. हाउ टैक्स प्रॉफिट इज गोइंग टू बी कैलकुलेट? दे विल से ध्रुव, your revenue is 10,000 extra accounting profit, which is right. Your accounting is right, but we calculate profit on cash basis, and we can see that your revenue out of the 10,000 revenue, only 50% of the cash has been received from receivables. Okay, Hmm. so as per tax base, हमारा revenue होगा 5,000 क्योंकि 50% of this, क्योंकि जितना कैश मिला उतना ही करेंगे. सेम एज एक्सपेंस, 50% हमने पे कर दिए थे तो हमें डिडक्शन मिल गया. करेक्ट? Do you know the more our expense would be, the less our profit would be, and the less our profit would be, the less our income tax would be. ठीक है? Yeah. तो what business entities tries to maximize their expenses to reduce the profit and to reduce the income tax paid. ठीक है? But isn't that bad for the company's future? Why? Profit कम तो फिर like नहीं, प्रॉफिट सिर्फ टैक्स कैलकुलेशन के लिए प्रॉफिट कम हो रहा है, और एक्चुअल प्रॉफिट इज 4,500, 5,000.
सिर्फ कैश कैलकुलेट, यू आर गेटिंग, जस्ट थिंक फ्रॉम अ ब्रॉड पर्सपेक्टिव। सी, वो कह रहे हैं कैश बेस, इसका मतलब इनकम टैक्स को पता है कि इसके अंदर कितने पेड हैं कितने नहीं, ओवर, क्या पता रेवेन्यू ओवर स्टेटेड हो, हाँ। एक्चुअल रेवेन्यू 9,000 ही और हम दिखा रहे 10,000। तो हम्म। कैश इज सेइंग जितना कैश मिल गया होगा, इसका मतलब वो तो ट्रू रेवेन्यू होगा, तभी कैश रिसीव हो गया। हम्म। करेक्ट। और जितना एक्सपेंस, अब क्या पता ये 5,000 इज ओवर स्टेटेड एक्सपेंस। राइट। करेक्ट। तो एंटिटी सिंह जितना पे किया है ना, जिसका आपके पास इनवॉइस एंड सब कुछ है, दैट विल बी, दैट अमाउंट, दैट मच विल गिव यू एज अ डिडक्शन, एज अ कैश एक्सपेंस डिडक्शन। राइट। ठीक है। हम्म। दिस इज द प्रॉफिट एज पर कैश बेसिस, एंड दिस इज द कैश बेस्ड प्रॉफिट, टैक्स प्रॉफिट। कितने का डिफरेंस आया? 250 का। करेक्ट। हम्म। तो इसका मतलब है कि जब हमने कैलकुलेट किया होगा, तो हमारा 500 वॉज एन एस्टिमेट। करेक्ट, 500 वॉज एन एस्टिमेट। बट दे पेड ओनली 250। बट जब पेमेंट आया 31 जुलाई को, जब हमने पे किया, जब सितंबर में हमने पे किया, इन आर क्वेश्चन मार्च इज डेडलाइन फॉर टैक्स पे फॉर कंपनीज। ठीक हम्म। है। तो हमने पे किया 250। इसका मतलब हमने लास्ट ईयर 500 ओवर प्रोविजन बना रखा था। यू एग्री? या। हमने जब पे किया 250 पे किया, क्योंकि कैश वाला कह रहा था नहीं आपका तो टैक्स 250 बन रहा है, तो 250 पे करो। तो जब करंट ईयर में आए, फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट ईयर, लेट्स चेंज आवर सिचुएशन, अब हम 2 पे पहुंच गए। ठीक है। तो 2 पे भी कुछ ऑपरेशन हुआ होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, 2 में प्रॉफिट आ रहा है, 2 में टैक्स आ रहा है हमारा, एस्टिमेटेड टैक्स, दैट इज अगेन, दैट इज 1,000, लेट्स से 1,000। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ओवर प्रीवियस ईयर, ओवर प्रोविजन, हाउ मच, 250। ठीक है। यस। तो 750 हमारे पीएनएल में शो होगा, बट ये खाली प्रेजेंटेशन है। बैलेंस शीट में क्या शो होगा? करंट टैक्स पेबल कहाँ पे शो होगा? करंट टैक्स पेबल कौन से हेड में? करंट लायबिलिटी। करेक्ट। वो कितना शो होगा? वो तो 1,000 ही शो होगा। ठीक है। ओवर पेमेंट भी आ जाएगा। नहीं, ओवर पेमेंट, लेट पुट इन होल्ड। 250 वुड बी ओवर पेमेंट, जो ओवर प्रोविजन बना रखा था। 750 हमारा करंट ईयर का है, नेट नेट आई मीन द प्रॉफिट। हम्म। टैक्स टैक्स इज 750, प्रॉफिट होगा जो भी लेस होके आएगा। ठीक है। अब हमने प्रोविजन बना रखा है। ठीक है, प्रोविजन बना रखा था। तो इनकम टैक्स प्रोविजन, फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर था 500 था, तो 500 हमने बना दिया। ठीक है। तो लेस क्या हो जाएगा? ओवर प्रोविजन, क्योंकि हमने ओवर प्रोविजन बना रखा था। करेक्ट। यस। राइट। ठीक है। तो दिस इज द एंटायर प्रेजेंटेशन। ये होगा करंट लायबिलिटी में, दिस इज ऑल्सो विल इन करंट लायबिलिटी, बट प्रेजेंटेशन का फर्क है कि हमको यूजर्स को देख के पता लग जाना चाहिए करंट ईयर का इतना है, प्रोविजन फंड बना रखा था, ओवर प्रोविजन कितना है 250, जो पीएनएल में भी शो हो रहा है और बैलेंस में भी शो हो रहा है। करेक्ट। राइट। ठीक है। डन। तो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ ओवर पेड। ठीक है। लेट्स टेक अंडर पेड, कि हमने यहाँ पे ही टैक्स एस्टिमेट किया कि 100 रुपये आता। ठीक है। करंट ईयर का टैक्स एस्टिमेट किया, हमारा 100 रुपीज आया। ठीक है।
एज पर टैक्स बेस हमारा प्रॉफिट आएगा 250, आई मीन टैक्स इज 250। नेक्स्ट ईयर सेम 1000 का प्रॉफिट है, बट यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रीवियस ईयर अंडर पेड टैक्स कितना, 150। अब तो ये प्लस होगा ना, अंडर पेड है, ओवर पेमेंट हम्म माइनस कर दिया, तो हम्म पीएनएल में विल शो 1150। ठीक है। करंट टैक्स लायबिलिटी 1000 ही रहेगा, क्योंकि करंट ईयर की लायबिलिटी है, वो तो हमने एस्टिमेटेड है। अब इसका भी लास्ट से समझ लो 1200 होता है, तो सेम एंट्री वो हम नेक्स्ट भी पास करेंगे। समझ रहा है क्या हो रहा है। एक बार। हाँ हाँ। हमें हमें आज का जितना भी है शो करना है। हम्म ठीक है, लायबिलिटी करंट ईयर का जितना भी है हमें शो करना है। तो हम प्रेजेंट ही उसी तरीके से करेंगे, करंट ईयर लायबिलिटी, करंट करंट टैक्स पेबल 1000। हमने प्रोविजन बना रखा था 500 का, ओवर अंडर पेड किया गया, हो गया 150 का। हम्म तो ओवर प्रोविजन फॉर एग्जांपल, प्रोविजन मतलब ये वो प्रोविजन नहीं है था, 500 यहाँ पे आ रहा था, आई मीन ये एंटिटी ने बना रखा है कि अगर टैक्स में कुछ ऊपर नीचे हुआ और हमारा एस्टिमेशन में कुछ ऊपर नीचे हुआ, हाँ हाँ, तो हमने 500 का सेफ साइड लेके रखा हुआ है। हाँ। तो हम अंडर पेमेंट ओवर पेमेंट इससे एडजस्ट करेंगे। ठीक है। हम्म तो अभी अभी के एग्जांपल में मैंने 500 ही हमारा प्रोविजन मैंने एस्टिमेट कर रखा था कि 500 ऊपर नीचे आएगा। ठीक है। अब ले अंडर पेमेंट कितना हुआ, 150। तो अंडर पेमेंट की एंट्री क्या बनी, सेम एज और फर्स्ट चैप्टर एग्जांपल जस्ट डिड नाउ, प्रीवियस ईयर लायबिलिटी। क्या एंट्री बनेगी, डेबिट वुड बी व्हाट। इनकम टैक्स टैक्स करेक्ट। एक्सपेंस हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। टू प्रोविजन। टू प्रोविजन 150, दोनों में प्लस प्लस हो गया, 1150 था, 1150 हो गया, यहाँ पे 650 हो गया। डाइजेस्ट हो पा रहा है। 650 करने का रीजन क्या है? हमारा प्रोविजन बड़ा, आई मीन प्रोविजन था 500 का, हाँ। बट हमने अंडर पे कर दिया। इसका मतलब हम प्रोविजन का एंट्री उससे एडजस्ट करेंगे ना, लायबिलिटी से। राइट। एंट्री क्या बन रही है, एंट्री इज फॉर इनकम टैक्स पेबल, क्रेडिट प्रोविजन। हम्म कहीं ना कहीं दूसरा भी तो इम्पैक्ट दिखाएंगे ना कि हमने अंडर पे किया हुआ है, हमारी लायबिलिटी और बड़ी हुई है। राइट। यस। बेसिकली हम प्रोविजन बना रहे हैं, प्रोविजन सेफ साइड लेके, और वो लायबिलिटी में दिखा रहे हैं। इसका मतलब व्हाट वी आर थिंकिंग, इन फ्यूचर और लायबिलिटी कुड बी 500, टैक्स के रिगार्डिंग टैक्स प्रोविजन सेफ साइड लेके चल रहे हैं कि हमारा एस्टिमेशन में ऊपर नीचे हो सकता है। हम्म। ठीक है। और हुआ ऊपर नीचे, हाँ। 500 तो हमने बना रखा था हमारा सेफ साइड के लिए, बट ऊपर नीचे हुआ, 150 का डिफरेंस आया, 150 हमने कम पे किया, तो हमारा प्रोविजन बढ़ जाएगा ना। गॉट इट। ठीक है। यस। नाउ रीड इट। Any under or over provision from prior year is dealt with current year tax charge। करंट ईयर टैक्स चार्ज हमने किया, करंट ईयर टैक्स, करंट से एडजस्टमेंट, हम्म 20x1 का जितना भी डिफरेंस आ रहा था पूरा एग्जांपल में हमने करंट ईयर में किया, हमारा 20x2 में सब कुछ बैलेंस यस। शीट में दिखा दिया, प्रोविजन से एडजस्ट किया, सब कुछ किया, एंट्री पास करी। दिस डज नॉट सी, क्या कह रहा है, दिस डज नॉट अफेक्ट ईयर एंड टैक्स लायबिलिटी। अब वो भी हो रहा है, हमारी करंट ईयर की लायबिलिटी 1000 है, 1000 ही शो कर रही है। डन। डन। यस। अभी नेक्स्ट ईयर फॉर एग्जाम्पल एस्टिमेटेड था कि हमने अभी भी ये 1000 इधर एस्टिमेट, ठीक है, पेबल आया 1200, तो नेक्स्ट ईयर भी क्या होगा, प्रॉफिट में से अंडर पेमेंट प्लस होगा,
नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट में से अंडर, जैसे हमने किया 150 को इस साल, सेम एज हम्म। प्रॉफिट, और उसी के एंटी बनेगी, प्रोविजन क्रेडिट हो जाएगा, प्रोविजन भी 200 से बढ़ जाएगा। बट जो नेक्स्ट ईयर की जो लायबिलिटी हमने एस्टिमेट करी होगी, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट ईयर की लायबिलिटी हमने एस्टिमेट की 1500, तो वो करंट ईयर लायबिलिटी में 1500 ही शो कर रहा होगा। प्रॉफिट एंड लॉस में करंट ईयर टैक्स चार्जेस 1500 प्लस 200 प्रीवियस ईयर अंडर प्रोविजन, दैट इज 700। करंट ईयर बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी 1500 का, इनकम टैक्स प्रोविजन हमारा 650 था, प्लस 200, दैट वुड बी 850। क्लियर? राइट। या। गुड। बट अब जैसे इसको पे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल वी पेड, अभी तो ये हमने क्यों पास करी है, अंडर पेड, अंडर पेड। फॉर एग्जाम्पल हमने पे कर दिया, अब ये इसका कब पेमेंट होगा, मार्च X3 में, क्योंकि दिसंबर X2 इज ईयर एंड। हाँ। तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी नेक्स्ट ईयर, जब हमने पे किया? लायबिलिटी कम तो डेबिट प्रोविजन लायबिलिटी, टू क्रेडिट कैश, एक्सपेंस कैश ना, रेशियो। कैश कैश हाँ पे हाँ। हुआ हम्म। 150। तो इसका मतलब हमारा प्रोविजन जब नेक्स्ट ईयर आया तब 500 ही रहा, हमने तो ये पे कर दिया ना, आई मीन टू से हम्म। 1150 हमने 31 दिसंबर 20 X3 में पे, सॉरी 31 मार्च 20 X3 में पे कर दिया होगा। हम्म। करेक्ट? तो हमने रिवर्स एंट्री ऑटोमेटिकली हो गया ना, रिवर्स एंट्री, डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट कैश 150 150। अब नेक्स्ट ईयर में हमारा प्रोविजन क्या हो, प्रोविजन बचा हुआ था, हमने बना रखा था 500 प्लस 200 तो 700 हुआ, पर अगर नहीं पे, फॉर एग्जाम्पल पेमेंट नहीं हुआ है, तो वो 150 वहां पे रहता, तो 850 होता। राइट। समझ रहा है क्या, लाइन बाई चीज चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं पे किया, बुक्स में शो होगा, पे कर दिया, कैश गया, लायबिलिटी कम हो गई, ठीक है। समझ आ गॉट गया? दैट। यस यस। So if you understood, do this question. It's 12:26. You have 4 minutes till 12:30. या।
Are you able to solve? 1 minute. Yeah, I think I'm done. The first requirement, the question says that this year estimated tax was 180, and in the previous year estimated it was 150. So as per 2x7, 165 was paid. So which is the over provision, as we are supposed to pay 150, but we paid 165. Yeah. So our estimate was understated. Wow, understated. But in previous year, I estimated about one. In previous year, I estimated was 150. Huh. But as per tax authorities and regulations, we paid ended up paying 165. So our estimate was understated, 115,000. Yes, yes. Correct, correct. The first one which you are referring 180 is the liability of current year, Huh. and we have been told that previous year income tax, previous year which is 20x7, our income tax estimate was 150. Profit and loss P&L impact of 2028 we have to show, considering the overpayment underpayment of 20x7 liability tax payable. Hmm. Okay. 150 was the estimate. We ended up paying 165. So our estimate was underpayment. And current year liability was 180. 180 plus 15 under provision, which is Hmm. 195. Right, right, right. And the And for second second one, one it is, was over because huh, we estimated 150, but we ended up paying 140. huh. 10,000 somewhere we paid over. So current year estimate 180 minus 10,000 overpayment over provision. Income tax expense will be 170. Hmm. Yeah. Understood. Now we are going to start the heart of this chapter, deferred tax. What is deferred tax? From the term, you can guess what is deferred and what is tax. Deferred tax. The word deferred, like as we studied earlier, Mhm. it means the amount that is supposed to be paid in within the 12 months. Not within the 12 months, somewhere in future. Okay. For example, deferred revenue. What does deferred revenue means? It's a long-term revenue, future revenue. Right. Correct. Yeah. If I entered into a contract, let's say $10,000 revenue contract, and the term of contract is 5 years. So my total contract is of 10,000. My revenue is total 10,000, but I'm deferring. I'll record 200, 200, 200, depending upon satisfaction of performance obligation every year. Hmm. So deferred, long-term revenue, deferred. Okay? Yeah. So it's a kind of a long-term tax that we can be able to know. Future tax, long-term. Okay? Deferred tax is the estimated future tax consequence of taxation, blah, 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 बहुत सारी theory. When I told you
this example once again. When I told you that our accounting profit and tax profit are not same, Hmm. deferred tax concept will bridge this gap. How, I'll let you know. See, tem- deferred tax introduces with two more terminologies: temporary difference and permanent difference. What these two? Temporary difference and permanent difference. ठीक है? Hmm. अब इसमें लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल. इसमें जब ये डिफरेंस जो आ रहा है, दैट इज वी हैव टू गेस टेम्पररी और परमानेंट. Okay. अक्रूवल बेसिस में हम जब कैलकुलेट करते हैं रेवेन्यू 10,000, बट कैश बेसिस में 5,000. तो कैश कैश इज जब पैसा जो हमने आपका कम रिकॉर्ड किया हुआ रेवेन्यू का, तो जब वो 5,000 मिल जाएगा आपको, रिकॉर्ड योर 5,000. Hmm. ठीक है? तो इसका मतलब ये टेम्पररी डिफरेंस है. जब वो पैसा मिल जाएगा हम टैक्स बेस उसको कैलकुलेट कर लेंगे. इसका मतलब क्या है कि नेक्स्ट ईयर अगर फॉर एग्जांपल मेरा रेवेन्यू मुझे मतलब कैश मिला इज ऑफ 12,000, Hmm. and that 12,000 of that particular year, but we also received our 5,000 revenue of previous year. The cash base is considered 17,000 revenue in that year, particular year. कि वो बोलेगा this is the revenue of this period only because we have received cash in this period. This will shown in accounting profit. Not accounting, cash profit. Accounting में कुछ change नहीं होगा. This is entirely from the cash perspective. Tax profit. How tax authorities are going to calculate? Tax authorities are saying if next year you're receiving 12,000 of that particular year, okay, fine enough. We will record, we'll account 12,000 your revenue basically. If you received your 5,000 of last year, we'll consider total 17,000 of that particular year. इसका मतलब कहीं ना कहीं रेवेन्यू आ गया ना कैलकुलेशन में. आज टैक्स नहीं पे किया बेसिकली. आज 5,000 का था, टेक्निकली हमें 500 पे करना था 10% के हिसाब से. Hmm. ठीक है? बट हमने कितना पे किया? 250. जब ये बाकी का मिल जाएगा रेवेन्यू, ठीक है, नेक्स्ट ईयर 17,000 हो रहा है, बट कहीं ना कहीं 5,000 कंपोनेंट भी आ ही रहा है ना. Hmm. फॉर एग्जाम्पल कैश और एक्सपेंस जो हमें पेबल आ रहा था, करंट हमें 5,000 है, बट नेक्स्ट पेबल हमने तो 25 बच रहा है, वो नेक्स्ट ईयर ही पे कर दिया. तो कहीं ना कहीं इसका कंपोनेंट भी आ गया प्रॉफिट में उसी टाइम पे, नेक्स्ट हाँ. ईयर. तो कहीं ना कहीं हम उस साल 250 का टैक्स ज्यादा पे करेंगे. Overpaid. नॉट ओवर पेड, नॉट ओवर पेड. टैक्स पे कर ही रहे ना, आज कम पे कर रहे हैं, बट नेक्स्ट ईयर पे आई मीन जब पैसा मिल जाएगा तब पे करेंगे. Right. ठीक है? तो इट्स अ टेम्पररी डिफरेंस कि हम आज आज इसके वजह से डिफरेंस आ रहा है इस चीज का. हाँ. नेक्स्ट ईयर कभी ना कभी विद इन 2-3 ईयर्स हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल, अक्रूवल मेथड के हिसाब से हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया यूजफुल लाइफ के हिसाब से 10 ईयर्स, बट कैश बेसिस नो, 10 ईयर्स के हिसाब से हम नहीं देंगे. हम कंसिडर करेंगे आपका 15 ईयर्स. Okay. ठीक है? तो हमने हमारा डेप्रिसिएशन करेंट में ज्यादा आ रहा होगा क्योंकि सी 10, अगर मैं असेट की वैल्यू को 100 रुपए, सेम 100 रुपए यहाँ पे भी थी. अगर मैं 10 साल की यूजफुल लाइफ लेता हूँ, यहाँ पे 15 साल की यूजफुल लाइफ है. ये है अकाउंटिंग प्रॉफिट, ये है टैक्स प्रॉफिट. ठीक है? Hmm. तो मेरा डेप्रिसिएशन जो बुक्स बुक्स दिस इज अकाउंटिंग प्रॉफिट जो बुक्स में आएगा वो 10 रुपए आएगा, पर वही चीज टैक्स प्रॉफिट के हिसाब से 6 रुपए ही आएगा. मतलब टैक्स वाले हमको बोलेंगे हम आपको 6 रुपए का ही डिडक्शन देंगे प्रॉफिट में से, आई मीन रेवेन्यू में से, इनकम में से. Hmm. ठीक है? तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे, ठीक है, वो 10 आज इतना कम दे रहा है, बट विद इन 50 ओवर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स हमें टोटल 100 रुपए का मिल जाएगा. हाँ. धीरे धीरे जीरो तक होते होते आज 10 साल में नहीं मिलेगा. बुक्स कह रही है 10 साल में मिल जाएगा डिडक्शन. टैक्स वाले सेइंग, टैक्स अथॉरिटीज आर सेइंग 15 ईयर्स में मिलेगा.
ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो मिल ही जा रहा है। हम्म। इट्स टेकिंग टाइम, आई अंडरस्टैंड, बट कहीं ना कहीं मिल जा रहा है आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम। तो इट्स अ टेम्पररी डिफरेंस। तो जो कैश बेस टैक्स प्रॉफिट और अकाउंटिंग प्रॉफिट में जो डिफरेंस आ रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ टेम्पररी डिफरेंस, टेम्पररी डिफरेंस। यू 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 अग्री राइट कि ये जो डिफरेंस आ रहा है क्यों आ रहा है? क्योंकि टेम्पररी चीजें हैं। जो टैक्स वाले इज सेइंग समथिंग एल्स, अकाउंटिंग प्रॉफिट इज सेइंग समथिंग एल्स, बट ऑल टुगेदर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दोनों चीज मैच हो जाएगी। राइट। अंडरस्टूड ना? या। So the difference is coming in the profit component is because of temporary difference, temporary. ठीक है, permanent. Now what is permanent? For example, we have paid fine penalties. कुछ पेनल्टी लग गया हमें बिजनेस पे। ठीक है, कुछ लीगल पेनल्टी है, ट्रैफिक पेनल्टी, एनीथिंग, कुछ भी। Tax will say no, we don't give any deduction for this penalty because we only give deduction of activities related to business and something which is legal and business. ठीक है, legal and business oriented. Penalty is something which is not business, although you have paid, but it's not business and it's illegal, illegal part. So we won't give reduction for this part. तो इसका मतलब अगर करंट ईयर में हमने 10 रुपए का पेनल्टी पे किया, ठीक है, टैक्स बिल से हम उसको रिडक्शन मानेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस हमेशा ही आएगा इसके वजह से। हाँ। रेवेन्यू नहीं मिल रहा था, जब मिला पैसा मिला, हमने अकाउंट में ले लिया। हम्म। डेप्रिसिएशन 10 साल का था, डेप्रिसिएशन 10 साल में हो रहा था, बट टैक्स वाले सिंह 15 ईयर्स, तो 15 ईयर्स में कहीं ना कहीं हमें 100 रुपीज का बेसिकली द कॉस्ट ऑफ असेट रिड्यूस हो जा रहा था, हमें डिडक्शन मिल जा रहा था। हम्म। परमानेंट डिफरेंस समथिंग कि नहीं मिलेगा। फाइन्स, पेनल्टीज, इलीगल एक्टिविटीज, बिजनेस और नॉन बिजनेस ओरिएंटेड, नॉन बिजनेस पर्पस, तो टैक्स बिल से हम उसको नहीं देंगे। और लॉजिकल है ना, ऐसे तो कितने ही एक्सपेंस बढ़ा देंगे। अगर मैं एक्सपेंस कर मैं बोलूँ पेनल्टीज मेरा 2000, तो मैं ऐसा तो टेक्निकली मेरा बिफोर पेनल्टी मेरा प्रॉफिट आना चाहिए था 500, बट बिकॉज ऑफ पेनल्टी का रिडक्शन भी मैंने कर दिया, तो नाउ माई प्रॉफिट इज 300, तो मैं कहीं ना कहीं कम पे कर रहा हूँ टैक्स। तो हम्म। ये तो हेरा फेरी हो गई। हाँ। करेक्ट? इज रॉन्ग। टैक्स वाले सिंह वी वोंट गिव डिडक्शन, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड 250 पे करना पड़ेगा, डिपेंड ऑन कैश बेसिस। नेक्स्ट ईयर जब आपका रेवेन्यू मिल जाएगा और कैश आई मीन एक्सपेंस भी पेड हो जाएगा, विल गिव विल अकाउंट ऑल दिस इनटू नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर जब भी मिलेगा। बराबर। ठीक है, बट पेनल्टी इज समथिंग विच वी वोंट कंसीडर इन द इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम, इट्स नेवर, इट्स नॉन डिडक्टेबल। ओके। ठीक है, तो इट्स अ परमानेंट डिफरेंस। जो टैक्स में डिफरेंस आ रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ परमानेंट कंपोनेंट, परमानेंट डिफरेंस। ठीक है, एंड नाउ व्हाई वी आर considering all these differences, because and also first question, why deferred tax is taken into account, why deferred tax component is existed? Because, well, I'll tell you theory. The motto of deferred tax is to match accounting profit and tax profit. वो कैसे होगा? The motto, वो कैसे होगा? Let's take this example. ठीक है, just delete this liability and penalty part. Penalty is, let's assume, is 0. ठीक है, हम्म। will calculate differences. How much was the temporary difference? 5,000 का रेवेन्यू माइनस 2,500 का एक्सपेंस, दिस वॉज द टेम्पररी डिफरेंस। करेक्ट?
Yeah. और रेट ऑफ टैक्स भी नो 10% है, Hmm. इसका 10% क्या हो गया, 250। तो 250 विल बी आर डेफर्ड टैक्स एडजस्टमेंट। ठीक है, लेस डेफर्ड टैक्स एडजस्ट। सो या deferred tax adjustment. Now you tell me from your understanding what you've understood. कि अगर once we receive our Hmm. revenue 5,000, for let's say we are receiving our cash from receivables 5,000 next year, and we'll pay 2,500. So it's a payable, right? It's a liability. How liability? The income is more than expense. तो जब हमारा ये भी रिसीव हो जाएगा कैश में, तो हमारा इनकम इनकम ज्यादा आएगी ना, तो अल्टीमेटली वी आर पेइंग कैश ऑन दैट कंपोनेंट नेक्स्ट ईयर। नहीं हो रहा है। Right. सी व्हाट आई एम सेइंग नाउ, मेरा रेवेन्यू अक्रूवल कॉन्सेप्ट के हिसाब से 10,000 है। Five इसमें thousand. इसमें हाँ. दोनों चीज इंक्लूडेड है। कैश मेरे को मिल गया 5,000, और 5,000 मेरे बुक्स में एआर में शो कर रहा है, अकाउंट रिसीवेबल। हाँ. इसका मतलब मैंने क्रेडिट पे बेचा होगा। हाँ. मैंने बोला नेक्स्ट ईयर मेरे को पेमेंट मिल जाएगा, बट टैक्स वाले कह रहे हैं ओके नेक्स्ट ईयर मिलेगा, ठीक है, विल अकाउंट, जब भी मिलेगा कैश विल अकाउंट नेक्स्ट ईयर। Hmm. आज आपको 5,000 ही मिला है, विल अकाउंट फॉर 5,000। आपने हाँ. आपने एक्सपेंस इतना पे 50% पे किया हुआ है, तो 2,500 का ही डिडक्शन मिलेगा आपको। हम 5,000 का डिडक्शन नहीं देंगे पूरा, क्योंकि जो पूरा आपका करेंट का एक्सपेंस है, बिकॉज यू हैव नॉट पेड फॉर फुल्ली। Hmm. जब आप पे कर दोगे Understood. विल रिकॉर्ड। तो जब नेक्स्ट Yeah. जब वी आर पेइंग, ठीक है, एंड वी आर रिसीविंग, तो व्हाट इज आवर केस, वी आर रिसीविंग 5,000, We're paying 25. वी हाँ. आर पेइंग 25, और नेट इनकम इज 2,500, उस पे हम टैक्स पे करेंगे नेक्स्ट ईयर। हाँ. तो इट्स अ डेफर्ड टैक्स एडजस्टमेंट बेसिकली। लॉन्ग ये लायबिलिटी हम बाद में पे करेंगे, आज नहीं पे कर रहे। Hmm. ठीक है, सो विल लेस, हाँ लेस डेफर्ड टैक्स -250। तो टोटल टैक्स इज इक्वल टू दिस। अब मैच हो गया Hmm. मेरा प्रॉफिट, और ये मैच हो गया। तो कैश का कोई सी डेफर्ड टैक्स इज जस्ट एन एडजस्टमेंट, इट्स अ मैचिंग कॉन्सेप्ट कि वी आर मैचिंग आवर अकाउंटिंग टैक्स विद द टैक्स बेस कैश। Right. ठीक है, कोई एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है। Hmm. Understood. ठीक है, so there are two terminologies for this adjustment name. First terminology is deferred tax liability, deferred tax asset। ठीक है, deferred tax liability means हमें आज पे नहीं करना, फ्यूचर में पे करना है। Hmm. ठीक है, डेफर्ड टैक्स असेट मतलब आज पे करना. आज पे नहीं करना, आज पे कर रहे हैं, फ्यूचर में पे नहीं करना है। Hmm. ठीक है, अब ये प्रॉफिट होगा नेगेटिव में होगा, जस्ट फॉर प्रेजेंटेशन की प्रॉफिट इज लेस। ठीक है, सो फ्रॉम योर अंडरस्टैंडिंग ये हमारा क्या है, डेफर्ड टैक्स असेट और लायबिलिटी, ये जो एडजस्टमेंट है। Asset because we are paying अभी.
एडजस्टमेंट तो अपन ने आज ही किया ना। हम्म। हाँ तो इधर अच्छा। What I want to know is it a deferred tax liability or asset? It's a deferred tax asset Why deferred tax asset? because we are paying it You're right. Just give me the rationale. because जो 250 है वो इस Mhm. साल का है and we are paying it this year. So that's why this is an asset. If it will be total पूरा ही 500 हम माइनस कर रहे होंगे तो it can be a liability. Let's understand this with this question. Can you see the question? Yeah. Let's solve it. Zenith bought a machine on 1st Jan 20x1 Hmm. at a price of $1 million. It will be used for 10 years, and the company expect means company expect to sell it at the end of and for $1 lakh. ठीक है, तो बुक्स में हम डेप्रिसिएशन इसे ऐसे कैलकुलेट दिस इज स्क्रैप वैल्यू. कंपनी चार्जेस एसएलएम मेथड फॉर अकाउंटिंग. टैक्स पर्पस के लिए डेप्रिसिएशन अलाउड 20% reducing balance each year, and income tax rate is given 30%. Calculate deferred tax charge or credit in the statement of profit and loss and deferred tax balance in the statement of financial position. ठीक है. Hmm. अकाउंटिंग टैक्स प्रॉफिट टैक्स बेस, अकाउंटिंग बेस एंड टैक्स बेस. ठीक है. असेट मशीन शो कर रही थी at 1000. The amount I'm converting in thousand. ठीक है. Hmm. Depreciation would be is equals to 1 lakh. 1000 minus 100 divided by 10. स्क्रैप वैल्यू डिडक्ट होगा ना 90. हाँ. Right. And for tax purpose the question is depreciation is allowed at 20%. मतलब टैक्स वाले कह रहे हैं will allow you depreciation reducing balance पे every year. ठीक है, into 20%. अब carrying amount. तो कहीं ना कहीं इफ यू थिंक फ्रॉम ब्रॉड पर्सपेक्टिव, अगर टैक्स में मेरा डेप्रिसिएशन 200 अलाउ किया होगा, इसका मतलब मेरा टैक्स का प्रॉफिट कम आया होगा. हाँ. ठीक है, टैक्स का प्रॉफिट कम आया होगा ना. हाँ. रेट ज्यादा है. तो कैरिंग वैल्यू कितना हो गया 800. और अकाउंटिंग बेस के हिसाब से कैरिंग वैल्यू बुक्स में क्या शो कर रही होगी 91. इसका मतलब आज मेरे को 200 का डिडक्शन मिल गया, बट नेक्स्ट जब मैं आगे पे करूंगा, आगे फ्यूचर ईयर्स, तो मेरे को अब सिर्फ 800 का 800 पे चार्ज मिलेगा. आई मीन कैरिंग वैल्यू ही कम होगी. इसका मतलब
फॉर एग्जाम्पल 10 साल है तो अगले 9 साल तक मेरे को सिर्फ 800 का रिडक्शन मिलेगा टोटल। ठीक है ना? 800 का रिडक्शन मिलेगा और मेरे को एज पर अकाउंटिंग बेस के हिसाब से 910 का मिलेगा रिडक्शन। हम्म। ठीक है? तो कहीं ना कहीं डिडक्शन कम मिलेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। करेक्ट, डिडक्शन कम मिलेगा एक्सपेंस कम, प्रॉफिट ज्यादा, टैक्स ज्यादा। तो टैक्स ज्यादा। तो टैक्स ज्यादा, तो इट्स अ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ठीक है? हाउ लायबिलिटी? बिकॉज टैक्स ज्यादा है इसलिए। बिकॉज आज हम कम पे कर रहे हैं, आज हम कम पे कर रहे हैं क्योंकि हमें ज्यादा का डिडक्शन आज ही मिल गया। हाँ। फ्यूचर ईयर में सिर्फ 800 का डिडक्शन मिलेगा। राइट। तो इन समवेयर फ्यूचर हम फ्यूचर में ज्यादा टैक्स पे करेंगे। हम्म। करेक्ट? गॉट। तो ज्यादा टैक्स पे ज्यादा, कम कम डेप्रिसिएशन मिलेगा, कम एक्सपेंस डिडक्टेबल करने को मिलेगा। प्रॉफिट वुड बी इंक्रीज, इफ प्रॉफिट इज इंक्रीज टैक्स विल इंक्रीज। हम्म। परफेक्ट। So it's a deferred tax liability. For example, if question would have told, let's solve this question for entirely, and the income tax rate is given 30%. ठीक है? तो what is the temporary difference? 910 minus 800, temporary difference इसकी वजह से ही आ रहा है हाँ। प्रॉफिट्स में। तो 110 इंटू 30%, 30% ना, टैक्स रेट इज गिवन इन क्वेश्चन। वैल्यू 33। तो 33। हम्म। तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी विल बी 33। तो डेफर्ड टैक्स चार्ज इन प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा? 33 हाँ। DTA, 33 PNL। बैलेंस शीट में क्या क्या शो होगा? अब ये 10 साल की बात है। सॉरी, DTL है, मैं राइट क्या लिखा हूँ। अब 10 साल की बात है। 10 साल में हमको टैक्स ज्यादा पे करना है। तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 33 NCL, नॉन करेंट लायबिलिटी, 10 साल तक। ठीक है? सी, डिफरेंस 33 का ही आ रहा है, मतलब हम कहीं ना कहीं ये सब एडजस्टमेंट करने से टैक्स 33 का ज्यादा पे करेंगे इन फ्यूचर ईयर, बट एक साल में नहीं कर देंगे, 9 साल में बाइफोकेट हो के पे करेंगे। समझ? यू आर गेटिंग माई पॉइंट? हाँ। दिस थर्टी इसलिए थ्री विल पे फॉर 10 साल तक। 10 साल तक, ओवर पीरियड ऑफ टाइम। हम्म। दैट्स व्हाई इट्स अ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी 33 की। और 33 का पीएनएल में शो होगा। ये पीएनएल में क्यों है? टू मैच अकाउंटिंग बेस। और जैसे ही हम 33, जस्ट थिंक, अभी डिफरेंस 33 का ही आ रहा होगा प्रॉफिट का, क्योंकि एक ही एडजस्टमेंट है और इसी के कारण डिफरेंस आ रहा होगा प्रॉफिट में हमारे, हम्म। आई मीन टैक्स में। हम्म। इसकी वजह से ये दोनों का टैक्स बेस सेम है, डिफरेंट है इसलिए। करेक्ट? तो 33 का डिफरेंस आ रहा होगा हाँ। बस। तो 33 इंटू रेट ऑफ टैक्स कर दिया 33, 110 टू 30%, 33 इधर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हम फ्यूचर इन फ्यूचर पे करेंगे। गॉट इट। करेक्ट ना? हम्म। ठीक है। ठीक है, दिस वुड बी आवर एंटायर इम्पैक्ट। ये जो डेप्रिसिएशन 200 है, सिर्फ क्लियर कर रही हूँ, जो
20% जो आरबीएम मेथड में हमें अलाउ किया था वही है ना, कैश बेसिस में, 1 मिलियन का 20%। हम्म। हाँ, डन। ठीक है। इफ somebody is saying you, हाँ, और this 33 is what, this is the closing balance, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस फॉर द ईयर, कि इतना डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है फॉर द ईयर, करेक्ट। हम्म। हम्म। इफ somebody says you कि मेरा ओपनिंग था, ओपनिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी वाज 11,000, ठीक है, और क्लोजिंग इज 33, तो मूवमेंट कितना हुआ, कैन यू से? डिफरेंस। इसका मतलब कहीं ना कहीं 22 का करंट में मूवमेंट हुआ, ऑल्दो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बट जस्ट आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल। 22,000 हमने ईयर 2 में पे किए। ईयर टू में पे नहीं किया हुआ, ईयर टू में दिस इज द, बचा है बैलेंस। यस यस यस, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस में 11,000 था, हाँ। नेक्स्ट ईयर के क्लोजिंग का हमें पता है 33,000 हो चुका है, तो कहीं ना कहीं हाँ। करंट ईयर में मूवमेंट, करंट ईयर की एक्चुअल डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज 22, करंट ईयर की एक्चुअल राइट। मूवमेंट, करंट ईयर मूवमेंट, हम्म। तो दैट विल बी 22। अभी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, तो दैट इज सॉर्टेड, बट आया तो, गॉट इट। you understood right, what are we learning, क्या हम करना चाह रहे हैं, हाँ। what are we trying to achieve, ये सब डिफरेंस फाइंड करके टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, what are objective इसके, just to match cash profit with the account profit, हम्म। ठीक है, we are basically implementing the matching concept, हम्म। कि जितना पे हो रहा है उतना हमारे बुक में शो हो, so for that IAS 12 come into the picture as deferred tax, DTL DTA, ठीक है, this was the राइट। example of DTL, we'll do example of DTA as well, so we'll do, don't worry। अगर if you understood, अगर तो DTA का क्या केस बन सकता है, you can guess, अगर इसमें कुछ चेंज करे क्वेश्चन में हम, तो क्या कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन इज सेइंग हम 5% ही दे रहे हैं डेप्रिसिएशन चार्ज, तो टैक्स बेस में 20% है ना, सिनेरियो चेंज हो गया, कटाक, अब हमें 950 का रिडक्शन मिलेगा नेक्स्ट 9 इयर्स में, तो आज हमने ज्यादा टैक्स पे किया, नेक्स्ट इन फ्यूचर ईयर्स हमारा डिडक्शन ज्यादा होगा, तो डिडक्शन ज्यादा होगा, प्रॉफिट कम होगा, तो दैट विल बी अ deferred tax asset, and deferred tax asset will show in non current asset, not current liability, ठीक है, बोथ लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एंड एसेट विल शो इन नॉन करेंट। या नॉन करंट, बिकॉज लॉन्ग टर्म में दिख रहा है ना क्लियरली, हम्म। यस। हमें फ्यूचर में 950 का डिडक्शन मिलेगा, ज्यादा डिडक्शन मिलेगा, करेक्ट ना, ऑल्दो नंबर ऑफ इयर्स आर गेटिंग इंक्रीज, आई एग्री, बट डिडक्शन ज्यादा मिल रहा है, समवेयर वी आर पेइंग प्रॉफिट, वी आर पेइंग लेस प्रॉफिट इन फ्यूचर ईयर्स, तो दैट इज आवर असेट, ठीक है, हेलो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। इन व्हाट काइंड, लाइक इन differentiating what is deferred tax liability and what is deferred tax asset. करेक्ट, अब ट्राई टू विजुअलाइज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, Okay. अगर कोई एक्सपेंस, एक एक चीज लेके चलते हैं, एक्सपेंस पकड़ते हैं अभी, हम्म। प्रोविजन एक्सपेंस लेके चलते हैं, अगर आई एम सेइंग यू कि आज मैंने प्रोविजन रिकॉर्ड किया ऑफ 10 रुपीज इन माई बुक्स ऑफ अकाउंट, सेइंग कि नेक्स्ट ईयर मुझे 10 रुपीज का कुछ खर्चा आ सकता है, तो मैं आज उसको प्रोविजन लेके चल रहा हूँ, ठीक है, एज पर IAS 37, हाँ।
तो मैंने बुक्स में दिखाया होगा डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट लायबिलिटी 10 10 रुपीज। यस। तो मेरे टैक्स प्रॉफिट में मैंने एक्सपेंस शो कर दिया 10 रुपए का। हाँ। नीचे आ गया डिडक्शन, तो प्रॉफिट मेरा कम आया होगा। हाँ। तो टैक्स व्हाट टैक्स पार्ट इज सेइंग कि जब आप 10 रुपीज उसको पे करोगे ना, विल गिव यू रिडक्शन एट दैट पीरियड ऑफ टाइम। तो कहीं ना कहीं ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम टैक्स किस कौन से पे कर रहे हैं। कैश प्रॉफिट पे हम टैक्स पे कर रहे हैं। हम 250 टैक्स पे कर रहे थे कैश प्रॉफिट। यू हम्म। अंडरस्टैंड। हम जब। टैक्स बेस जो टैक्स निकाल रही है हमारा टैक्स बेस, हम्म। हम वो टैक्स पे कर रहे हैं। हम्म। ठीक है। तो वो टैक्स बेस क्या करेंगे, वो 10 रुपए का रिडक्शन उस साल में लेंगे ही नहीं। जब होगा तब तब करेंगे। तब करेंगे, करेक्ट करेक्ट। हाँ हाँ। तो हमारा प्रॉफिट टैक्स बेस में ज्यादा आया होगा 10 रुपए से, 10 रुपए से ज्यादा आया होगा ना टैक्स, तो डिडक्शन में लिया नहीं। हाँ। तो हमने ज्यादा ले लिया नेक्स्ट, ज्यादा ले लिया इसका मतलब हमने पे कर दिया। और जब डिडक्शन मिलेगा तो आगे हमको नहीं पे करना है इन फ्यूचर। यू अंडरस्टैंडिंग क्या हो रहा है। जब हाँ। नेक्स्ट ईयर जब पे हो जाएगा, हम डिडक्शन मिलेगा। ओके। हाँ। करेक्ट। अब तो समझे। आज हाँ। हमने पे कर दिया, नेक्स्ट हम नहीं, हमको नहीं पे करना है, तो इट्स एन हम्म। असेट। राइट। सेम एज दिस एग्जांपल, इसमें डेप्रिसिएशन कि बुक्स में हमारा डेप्रिसिएशन, इसके दो लॉजिक है समझने के। हम्म। असेट का टेम्परेरी डिफरेंस निकालना। फर्स्ट लेके चलते हैं प्रॉफिट्स का, प्रॉफिट डेप्रिसिएशन। अकाउंटिंग के बुक्स के हिसाब से अकाउंटिंग वाले कह रहे हैं नहीं, मैं 90 रुपीज चार्ज करूंगा मेरे फर्स्ट ईयर में। हम्म। बट टैक्स वाले से कह रहे हैं नो, एज पर आवर अजम्पशन 50 विल बी अलाउड। इसका मतलब कम कर रहे हैं, कम प्रॉफिट ज्यादा आएगा, वी विल बी पेइंग अपन ने मोर पे टैक्स एज कर पर दिया टैक्स है। बेस। हाँ। हम्म। बट आगे आगे मुझे, तो मेरी कैरिंग अमाउंट कितनी आ गई आगे, 950 की कैरिंग अमाउंट आई। हम्म। टैक्स बेस के अकाउंटिंग प्रॉफिट के 910। तो मेरा प्रॉफिट आज मैंने ज्यादा पे कर दिया हुआ है। नेक्स्ट ईयर जब रिडक्शन मिलेगा 950 का रिडक्शन मिलेगा कंपेयर टू टैक्स बेस, सॉरी अकाउंटिंग बेस जो 9 विच इज 50। 910। हाँ, जो हमने पे कर दिया है। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं वी विल पेइंग लेस टैक्सेस। हाँ। तो दैट्स व्हाई इट्स एन असेट। बट अगर अगर कोई करंट क्वेश्चन लेके चलते हैं, हम्म। हमारा 20% था, हम्म। तो टैक्स वाले इज गिविंग यू प्रॉफिट 200 का रिडक्शन आज के साल में ही। इसका मतलब आज के साल में यू आर पेइंग लेस टैक्सेस क्योंकि योर एक्सपेंसेस आर इंक्रीज। हम्म। बिकॉज योर एक्सपेंसेस आर इंक्रीज, यू आर पेइंग लेस टैक्सेस। लेस टैक्सेस। तो आज की तारीख में इज योर लेस टैक्सेस, बट नेक्स्ट ईयर यू हैव टू पे मोर। वाई? क्योंकि अब 800 का डिडक्शन मिलेगा, 800 हाँ। जितना ही। राइट। तो डिडक्शन कम मिला, प्रॉफिट बढ़ गया, इट्स एन लायबिलिटी। सो इट्स अ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म असेट। गॉट इट। परफेक्ट। डन। ठीक है, एकदम परफेक्ट। यस यस यस। ओके। तो I wanted to solve one question. Let me see which you can do. Okay, we have one more concept, huh? Revaluation. Okay, let's understand revaluation the concept and then we'll do combine the example. अभी तक का जितना भी डेफर्ड ये आ रहा था पीएनएल की आइटम, वो कहाँ पे वेयर वी वर शोइंग दिस। नॉन करेंट लायबिलिटी। नहीं नहीं, पीएनएल में पीपीटी प्रॉफिट। लेस करंट टैक्स, करंट टैक्स प्लस डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ठीक है। जब हम हाँ। तब हमको पीएटी मिल रहा था। हम्म। बट अगर जब भी क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन आ रहा है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल टेम्पररी डिफरेंस रिवैल्यूएशन की वजह से भी आ रहा है, आ सकता है। कैसे आ सकता है, इसी एग्जांपल को लेके चलते हैं।
हम्म। uh, we have as per IAS 16 we can use two method, revaluation method, cost based. कॉस्ट करंट ईयर में $1 million था, हमने शिफ्ट कर लिया, वी आर सेइंग नहीं, वी विल यूज फेयर वैल्यू मेथड। फेयर वैल्यू मेथड में हमारा फेयर वैल्यू हो गया 1200 नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट। हम्म। ठीक है, हम्म। तो क्या सिचुएशन हो गई अपनी। और टैक्स वाले, टैक्स विल सेव, टैक्स देख, टैक्स वाले ना बहुत रिजिड है दिल से, नो। जब डिस्पोज करोगे ना इसको आप, हम्म। तब हम मानेंगे कि दिस इज, ये इसकी एक्चुअल वैल्यू 1200 है। अभी यू आर शोइंग 1200, दैट इज फाइन। बट वो बोलेंगे जब डिस्पोज होगा ना, और जब 1200 में डिस्पोज होगा, विल विल अंडरस्टैंड कि हाँ ये ठीक है, तो हम जो गेन और लॉस हुआ होगा हम पीएनएल में बुक करेंगे। बट अभी हम बुक्स की इसकी वैल्यू 1000 ही मानेंगे, बिकॉज यू हैव पेड ओनली 1000 फॉर दिस असेट। ठीक है, तो आगे टेम्पररी डिफरेंस, अकाउंटिंग वाले 1200 पे फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, टैक्स वाले सेइंग कि विल बुक, टैक्स बेस सेइंग विल बुक इन, बुक ऑन कॉस्ट विच इज 1000। तो डेप्रिसिएशन क्या आया मेरा, वही होगा। this minus 1000 was scrap value as per question, divide by 10। लेट्स से सेम डेट पे ही हमने चेंज भी कर दिया कि सेम डेट जस्ट परचेस किया, हम उसको फेयर वैल्यू पे दिखा रहे हैं आज, और फेयर वैल्यू भी हो गई 1200। ठीक है, तो क्या सीन हो रहा है, जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ रही है, बेसिकली जो डिफरेंस आ रहा है 290 का, इसमें से 200 इज बिकॉज ऑफ रिवैल्यूएशन, जो अग्री, हम्म। इसकी वजह से डिफरेंस आया। और हाँ। 90 डेप्रिसिएशन, हाँ। करेक्ट ना, तभी कैरिंग हाँ। वैल्यू में 290 का डिफरेंस आया हुआ है। तो इसका हम्म। मतलब 200 इज अ पार्ट ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन की वजह से डिफरेंस आया, और 90 इज बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्थ। हाँ। तो कौन टोटल। का IAS 12 सेज कि अगर, नहीं, ये लायबिलिटी तो ठीक है 87 आ रही है, तो डेट इज फाइन, 87 ही आएगी, और डीटीएल भी हम उतना ही शो करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट, आज हमें 200 का डेप्रिसिएशन मिल गया, अब कैरिंग वैल्यू इज ओनली 800, हमें 800 का डिडक्शन मिलेगा, ऑल्दो हमारे बुक्स में 1090 पे कैरिंग वैल्यू शो कर रहा है, बट स्टिल विल गेट ओनली डिडक्शन ऑफ 800 ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हम्म। Somewhere we will be getting less deduction, we'll be paying more, we'll getting more profit, and we will be paying more taxes. It's a deferred tax liability that you agreed, ठीक है। But IAS 12 is saying कि अगर अगर टेम्पररी डिफरेंस इज कमिंग फ्रॉम रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिवैल्यूएशन की वजह से डिफरेंस आ रहा है, तो 200 का 30% बेसिकली जो टैक्स रेट है, ये हम शो करेंगे रिवैल्यूएशन रिजर्व में। फॉर एग्जाम्पल जब मैंने शो बुक में शो किया होगा, जैसे 1200 हुआ होगा, तो मैंने क्या एंट्री पास करी होगी, डेबिट वुड बी असेट, गेन। क्रेडिट वुड बी आर ई गेन। ठीक है, हाँ, और वो वो कहाँ तो पे शो बात कर है। रहा था मैं। ओसीआई। हम्म। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इज सेइंग कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आपका डिफरेंस इसकी वजह से आया है। तो जो ओसीआई में 200 का गेन दिख रहा होगा, ओसीआई में हम्म। आर ई, आर ई एस सरप्लस, रिवैल्यूएशन सरप्लस 200 का शो कर रहा होगा, दिस लेस डीटीएल, हाउ मच, 87। नॉट 87, 60 ना, से 60 कंपोनेंट आएगा, 60 का। हाँ, 60 केम। अरे 60 इसमें आएगा, रिवैल्यूएशन का पार्ट है, और बाकी का 27 विल गो इन सेम यहाँ पे, आई मीन प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस प्रॉफिट फॉर द ईयर पार्ट में आएगा, अब 27 का, क्योंकि 27 तो आई मीन ऑपरेशंस का ही पार्ट हो गया ना। 200 वाज द रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन सरप्लस का टेम्पररी डिफरेंस था, हाँ। सिर्फ प्रेजेंटेशन चेंज हुआ है, पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में 87 ही जा रहा है, जस्ट 60 विल गो इन दिस ओसीआई में डिडक्शन हो जाएगा,
हाँ, रिवैल्यूएशन रिजर्व लेस 60, कॉस्ट ऑफ रिवैल्यूएशन, हाँ, और 27 ऊपर ही शो करेगा सेम, तो करंट टैक्स डिप्रिसिएशन का प्लस डीटीएल 27। 60 रिवैल्यूएशन का और हाँ 27 डेप्रिसिएशन का। करेक्ट करेक्ट, बस प्रेजेंटेशन का फर्क आ रहा है। हाँ, ओके, ठीक है। बराबर, समझ। Okay. Then let's solve this question. Are we done with the concept? Your mic is mute. Your mic is mute. I'm sorry, I can't listen. Sorry. What I was saying, uh, let's take a lunch break. After lunch break, we'll solve this question and we'll complete our last treatment for losses. Okay? Okay. So it's 1:15. Let's meet at 1:45. Okay.
Hello. Hello. Yeah. Yeah, so let's start with the question. We'll solve the same way which we did the previous one. Machinery purchased on 1st Jan. Land, land was bought on 1st Jan at $65,000. Market value was $80,000. Tax provision needed for the year ending. Now, what is this tax provision from the question? Can you understand? The provision that we made for the tax supposed to be incurred in next year. This is the current year tax provision. What you told next year, not next year. See, 1st Jan 20x8, the land was Um, purchased on this. The income tax provision needed for the year end in December. So 1st Jan December. So mm-hmm. this is the current year tax payable amount. Right. And they have been given us the difference between carrying amount and the tax base as well. Basically, this difference they're talking about, this one. Okay, they have given us opening balance of deferred tax. ओपनिंग बैलेंस भी आ गया. इनकम टैक्स इज 25%. ठीक है. लैंड इज नॉट depreciated. There's no depreciated part. Building Leo company has revalued it amount, so they will continue to record it 80,000. Tax base we say until unless not sold, we won't consider this 80,000 value. We'll still record it at 65,000. Okay. The difference is how much? 15,000. Okay. Hmm. But they are saying difference between carrying amount and the tax base of company's net asset, including land surplus devaluation. तो इससे पता चल गया कि 15,000. इसका मतलब लैंड का जो टेम्पररी डिफरेंस है इट्स कमिंग 15,000. और कंपनीज नेट असेट मतलब सारे नेट असेट्स की डिफरेंस दे दिया वो 25,000 27,000. इसका मतलब 20,000 इज व्हाट टोटल नेट असेट्स का. नेट असेट मतलब टोटल असेट्स माइनस लायबिलिटी. हाँ. ठीक है. उसका टेम्पररी डिफरेंस दिया हुआ है 25,000 इंक्लूडिंग लैंड रिवैल्यूएशन सरप्लस. तो सिर्फ नेट असेट का कितना होगा? सॉरी, 12,000 राइट. हम्म. तो 12,000 का 25% कहाँ जाएगा? नॉन करंट लाइबिलिटी. बट पीएनएल में कहाँ शो होगा? पीएनएल में कितना शो होगा? 6750 30%. 25 ना. हाँ तो ओके या where does temporary difference of revaluation surplus goes? पीएनएल. बट ओसीआई में ना. रिवैल्यूएशन सरप्लस आई एम टॉकिंग अबाउट. या. तो मैंने अभी क्या किया, 27 पूरा 25% ले लिया. हाँ. और रिवैल्यूएशन सरप्लस का कितना है टेम्पररी डिफरेंस का टैक्स रेट? 3750. हम्म. 6750. तो -3750. सो पीएनएल में शो होगा 3,000, बेसिकली बिलो करंट टैक्स अमाउंट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी. हम्म. असेट रिवैल्यूएशन विल बी हाउ मच? डेबिट असेट क्रेडिट रिवैल्यूएशन. ओसीआई में रिवैल्यूएशन शो होगा 15,000 का. टैक्स कितना जाएगा? 37,100. तो नेट कितना है? नेट सरप्लस दिस माइनस. अंडरस्टूड. 1125. Perfect. Now question is saying opening balance is 2,600. ओपनिंग बैलेंस ऑफ डिफर्ड टैक्स अमाउंट हाँ, of deferred tax account.
3000 is चलता है. So closing balance is, we know, 6750. हम्म. इसका मतलब करंट ईयर मूवमेंट कितना हुआ? माइनस 4150. 4150. तो इसका मतलब just second, just checking out whether question is right or wrong. Otherwise, otherwise our non-current liability will be wrong. Just a second, huh? Yes. Yeah, yeah. So where we were, yeah, net surplus was 11,250. And in question, we have given that opening balance on deferred tax account was 2,600. हम्म. Okay. So opening balance was how much? Current year movement and CL balance. What is Closing closing balance. balance? 6750. 6750. Okay. So do you agree, out of this 4,500 of current year movement, 3,750 is um, DTL of the DTL because of revaluation surplus? This one. Yes. ठीक है. इसका मतलब out of this 4150, which is the current year movement, 3750 is revaluation surplus DTA. How much is PNL DTA? Only. 400. So in PNL, see, try to understand the impact. And in question, they will ask you anything. They can ask you हम्म. entire treatment in the financial statements or a particular account balance. So if you see the DTL of where PNL में 19,400 of current year tax provision na, हाँ. and our matching concept will come deferred tax liability 400. हम्म. Okay, plus 3750 will go where? Here in OCI presentation part, DTL 3750 below revaluation surplus. हाँ. In balance sheet, DTL will show how much? 6750 the closing balance. In हाँ. balance sheet, the closing balance 6750, we know. हम्म. ठीक है. If they ask entry for OCI, you know. So the net revaluation surplus, this is the net surplus. This will go in RE. What is RE? Retained earnings. Correct. Chalo, perfect. So four accounts are impacted. First PNL, OCI. OCI, then Balance sheet. balance sheet में क्या? The liability deferred. Liability, correct. Liability लिखेंगे and Liability at what? Closing balance. yes, liability closing balance. Yeah. That's it. And fourth one, Retained earnings. and fifth one more. ये भी तो आएगा करंट लायबिलिटी में 940. हाँ. Basically, in current liability में Retained. 19,400 भी आएगा as what? Current year tax payable. हम्म. Now don't tell कि 19,800 क्यों नहीं आया, क्योंकि 400 plus 3750 plus 2,600 is come under this, already been हम्म. accounted in DTL.
हम्म. ठीक है, तो मेक श्योर, हमेशा ध्यान रखना, करंट ईयर टैक्स पेबल विल कम अंडर करंट लायबिलिटी सेम अमाउंट। राइट. क्योंकि ये जो हम 400 3750 कर रहे हैं, दैट इज ओनली मैचिंग कॉन्सेप्ट एडजस्टमेंट, बट हम्म. करंट ईयर का जो भी है दैट विल कम अंडर करंट ईयर लायबिलिटी सेम अमाउंट विच इज 19400, विच इज एस्टिमेटेड टैक्स अमाउंट ऑफ करंट ईयर। राइट. ठीक है। या. Done. One last topic. Now you can say what is the main gist of this chapter. Why are we doing this chapter? Because everyone knows how to multiply percentage with the profit. मतलब profit है percentage multiply को tax rate will get the tax profit. I mean the tax component of current year. But the reason why we are doing all this stuff is because there is a difference between tax calculation, tax authorities calculation of profit and accounting profit because of different method. They use cash. We use accrual method. हम्म. And because of that a difference, a temporary difference has been created, and in order to match that amount we are doing all this stuff. और वो अगर हम मैच करेंगे टेम्पररी डिफरेंस का जो टैक्स कंपोनेंट डिफरेंस आ रहा है, the tax base and accounting praise accounting profit component will be the same. हम्म. ठीक है, मैचिंग बन सकता है. मैचिंग कॉन्स. Just read this textbook theory, although I explained you the revaluation part, but we'll again read that. Deferred tax should be recognized on revaluation gains, even where there is no intention to sell. In our current example, there was no intention to sell, but still we recorded. Okay. राइट. The revaluation on NCA results in taxable temporary difference. Taxable. When does the term taxable come? When it's a liability. ओके. Taxable means liability. अगर हम्म. डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस है तो डीटीए हो जाएगा, ध्यान रखना. हाँ. असेट डिडक्टेबल, डिडक्टेबल हो रहा है, डिडक्टेबल माइनस हो रहा है, हम्म. प्रॉफिट कम होगा, टैक्स कम होगा, तो इट्स डिडक्टेबल. हम्म. बस अगर टैक्सेबल आ रहा है तो इट मींस डीटीएल. ठीक है. राइट. राइट. So a non-current asset results in deferred tax liability, taxable temporary difference. Hence, a deferred tax liability arises. This is recognized as a component of other comprehensive income consisting of revaluation gain itself. Okay. This is therefore disclosed either in statement of profit and loss (OCI) or in separate statement showing other comprehensive income. हम्म. Done. This all we did. Here. हम्म. राइट. Now tax losses. अगर प्रॉफिट हुआ ही नहीं तो, if we say our revenue is 100 rupees and our expense is 500, we incur loss of 400, no? हम्म. In that case, may generate deferred tax asset, because if those losses are carried forward, it will result in reduction in future taxable payable. Basically, taxation में क्या होता है? For example, I'm saying you the actual tax rule from UK taxation syllabus. हम्म. हम्म. Whenever we incur a loss, we have three options. ओके. Okay. First, deduct our losses from our current year other income. For example, we are also generating rental income. हम्म. अगर कुछ capital gain हो रहा है, we can reduce from that amount. बट If व्हाट इफ not, इट्स रिसीवेबल? how? What receivable? लाइक मिली नहीं है उस ईयर तो फिर? I'm talking about accrual method concept, not cash. ओके. We incur loss of 400, हम्म. and we have option to deduct that loss from current year profits, other income from other income. If we do not have any other income, we can carry back from previous year profit. I'm talking about tax rules. ठीक है. हम्म. दिस वोंट बी टेस्टेड इन एफआर, बट एफआर में जनरली होगा कि फ्यूचर में जब भी फ्यूचर के प्रॉफिट से रिड्यूस कर सकते हैं. बट आई एम टेकिंग यू अ बिट इन डिटेल फ्रॉम टैक्सेशन पॉइंट ऑफ. राइट. हम कैरी बैक कर सकते हैं अपना लॉस 400 का. ठीक है. और फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर टैक्स रेट था 20%. हम्म. तो इसका मतलब जस्ट जस्ट अंडरस्टैंड, इफ यू आर कैरिंग बैक आवर लॉसेस, तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट कम हो जाएगा क्योंकि हम लॉसेस भी ऑफसेट कर रहे हैं उससे. हाँ. ठीक है. और रेट था 20%.
तो कहीं ना कहीं 400 into 20% कितना होता है? 80। 80। तो 80 का हमने सेव कर लिया प्रॉफिट लास्ट ईयर से, हम्म। एंड अज्यूमिंग लास्ट ईयर हमने 200 पे किया था, तो आउट ऑफ 280 वी रिक्लेम्ड अगेन बाय हम्म। ऑफसेटिंग आवर करंट ईयर लॉसेस। 280। ठीक है, हम्म। तो 120 इज आवर नेट tax payment of last year. ओके। This is one treatment. Second treatment. First is offset with other income we have. If हम्म। not, we have option to carry back, carry forward for infinite period of time until and unless we offset entire losses. But there is only one condition, that we have to incur profit in future years. अगर profit incur नहीं हुआ तो how will offset our losses ना? हम्म। ठीक है. Right. In FR we have this we have only this concept that we are offsetting our losses from future profits. So from the taxation point of view, we have three options. So we have to choose the best one which we can do. So if we say कि अगर हमने फ्यूचर ईयर्स के लॉसेस ऑफसेट किया, एंड देयर इज अ हाई चांस कि फ्यूचर ईयर का टैक्स रेट चेंज हो गया, फॉर एग्जांपल 20 से 25 हो गया, इसका मतलब वी विल बी सेविंग मोर 5% compared to last year which was only 20%, we were saving 80. हम्म। It can be vice versa. अगर 20 से टैक्स रेट गवर्नमेंट इज जनरस इनफ saying no, we are reducing our tax rate to 15%, so it is better to offset from previous year because हम वहां पर 20% सेव कर देते हैं. हाँ। ठीक है, so it's already a best, we have to choose the best possible outcome, and being a tax advisor we have to advise our client which method to use. Right. ठीक है, let's come in FR. Tax losses may generate a deferred tax asset. Why deferred tax asset? Because in future if we are incurring profit, we'll be reducing our losses rate from that profits. Basically we will be offsetting our losses with the profit, that हम्म। will reduce our profit, and it is deferred tax, we'll be paying less taxes, so it's a deferred tax asset. Right. Correct. So that's what the theory is saying. Tax losses may. Why may? Because what if we do not generate profit in future years? So that's why it's may. कि may अगर future years में profit generate ही नहीं हो रहा, there is no point of creating deferred tax asset. It will increase inflate our balance sheet assets, and it will misunderstood the stakeholders. हम्म। Right. ठीक है. That's why the word used may here, but हम्म। mostly it's must only. There's no instances where it may, but still अगर हुआ तो we won't be recording deferred tax asset. So if those losses are carried forward and there are sufficient taxable future profits are expected to be available, we have to estimate कि आज losses हुआ है, okay, अच्छा next 5 years में we'll able to offset our losses and we'll be able to generate enough profit to offset our losses. ठीक है. हम्म। It will result in reduction in future tax payable. In such circumstances we should skeptical, we have to use questioning mind. Skeptical, we have to use questioning mind of projected profits given by the company's historical loss making performance. That we have to use our professional skepticism, professional judgment, professional experience to understand projected future cash flow, given that we have performed very poor in current financial years. As Right. a result we have generated losses. हम्म। So it's a tedious task to assess whether are we going to generate profits or not. If, however, the entity is part of a group and may surrender tax losses to other group companies, a deferred tax asset may be recognized in the consolidated account. This comes a topic of consolidation. For example, three companies is in a group. One company is making losses. The standard is saying, well, no problem. If your company in the same group is generating profit, you can offset your losses with those profits, and you can हम्म। record deferred tax asset in the consolidated statement of financial position in balance sheet item. Understood? Same Right. concept है, because group में क्या है, now we are one entity. ठीक है. हाँ। The asset is equal to the tax losses expected to be utilized
asset is what? Deferred tax asset. The deferred tax asset is equal to tax losses expected to be utilized multiplied by rate. For example, let's take I incurred loss of 400. ठीक है? In future I only expect that I'll get a profit of only 200. ठीक है? इसका मतलब out of this 400 I'll only able to offset for 200. So 200, right? 200 into 10%, considering the rate of interest 10% is my Okay. deferred tax asset. 20 would be my deferred tax asset. Hmm. But I say that my future profit projected profit is 600. It means ki we are able to offset full our 400 of losses. Still So, have a profit of 200. so what we'll do? Our deferred tax asset in that case will be 40. Okay. Right. Why it's not 60? Because we are able to pay our we Because are हमारा able लॉस ही उतना है तो हम डेफर्ड टैक्स भी हाँ उतना ही रिकॉर्ड करेंगे ना. हाँ वही. 600 के बेसिस पे क्यों करेंगे? प्रॉफिट तो 1000 भी हो सकता है पर हमारा लॉस इज हम सिर्फ ऑफसेट ही 400 कर रहे हैं. तो 400 into rate of interest is a deferred tax asset. जितना लॉस उतना ऑफसेट करें. Yes, yes. Right. Let's do this just to understanding to last question of the topic. Are we gonna start new topic after this? No, we are done with the agenda. Na? We'll start IFRS 9 tomorrow. Financial. Okay. Okay. So, on 1st Jan 2008, Simon Hmm. decided to revalue. Acha, this is the same question I picked. The only name of company is different. If you notice, Leo Limited revalue land 65,000, 85,000 first Jan 2008. 19,400. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah. See, opening balance is 2,600. Hmm. Okay, okay. ठीक है. No worries. We already solved it. ठीक है. If you have any doubt, you can ask me. Any question why related to conceptual clarity, anything you want me to repeat? Because we have completed our chapter a bit early, so we have a bit of time to discuss. I think that once I revise, then मेरे को थोड़े से ज़्यादा doubts आएंगे. तो Okay, next lecture जब होगा, then till then I'll clear my doubts. okay, okay. But till now, whatever I've explained you, हाँ वो you सब. understood. Yeah, I Yeah. understand. Okay, perfect, perfect. Only revision is pending. It Hmm. will increase your conceptual clarity. No worries. Yes. Okay, ठीक है. ठीक है, then okay, we can wrap up for today. We'll Okay. meet tomorrow with new topic IFRS 9 financial instruments. So Done. it's a bit tricky and lengthy topic. We'll start tomorrow with a fresh mind and hope we'll complete it tomorrow. Done. So till then, bye. Thank you so much. Yeah, bye. Bye.